of those who embody these qualities. मोबाइल Therefore, में in order to master these सर्च characteristics, I welcome you all to our यूट्यूब पे today's सर्च करो session, यूट्यूब where we can get deep understanding into physics, मोबाइल which में not only includes theoretical concepts but also practical implementation. It's a great privilege to formally अमोल greet कब से सर्च today's करो extraordinary and special personality, a person with extensive knowledge who merely requires an introduction. He is an Indian scientist and educator, सब्सक्राइब best known for his work in science education, particularly through the use of simple, inexpensive, and creative methods. He pursued his undergraduate studies in mechanical engineering from IIT Kanpur, where his interest in science education began to ये take आगे shape. लिंक आप शेयर कर सकते हो He is also the founder of the जो लिंक Arvind है Gupta ये Toys लिंक है Museum, शेयर which करो showcases a collection of educational toys he शेयर created शेयर to व्हाट्सएप demonstrate बंद करा उनको शेयर करो scientific ये principles. है ना His work has earned वही से recognition in both India and globally, contributing significantly to the improvement of science education in the country. ट्राइपॉड और May I now request the School Affairs Sridhar Khandekar sir, MIT Academy of Engineering, to felicitate the distinguished individual Padma Shri Arvind Gupta sir. मैं लॅबमधून ट्रायपॉड स्टँड आणि कॅमेऱ्याची बॅग घेऊन ये तुझ्या केबिनकडे माझ्या केबिनमध्ये तुम्ही ट्रायपॉड स्टँड आणि कॅमेऱ्याची बॅग द्या लगेच मॅडम Without any further delay, I'd like to call Dr. Vaishali Mangekar ma'am to have a welcome note. A warm welcome to you, sir, over here. We have a great enthusiastic mob with us, the school kids, Jagruti girls, and MIT AOE students. You are having really a great opportunity to interact with Dr. Arvind Gupta ji, sir, and you can be a great innovator if you could take some takeaways from this today's interaction with sir. So there is no need to introduce Arvind Gupta sir to you all. He is a well-known personality, and by not just taking a lot of time to speak about him, we will directly go ahead with his demonstrations and his gaming activities. So welcome you, sir, again, once again. Thank you so much. लवकर कॅमेरा गुड मॉर्निंग हियर इन द बैक मैं आपसे ज़्यादातर मैं हिंदी और अंग्रेजी जानता हूँ मराठी समझता हूँ पर अच्छी तरह से बोल नहीं पाता तो मैं आपसे हिंदी में बात करूँगा बीच बीच में अंग्रेजी से बात करूँगा मेरा नाम है अतुल गुप्ता और मेरी बस एक ही पहचान है कि मैं पिछले 40 साल से बच्चों के लिए खिलौने बनाता हूँ बहुत से बच्चों को स्कूल जाना नापसंद है स्कूल से नफरत होती है बच्चे स्कूल नहीं जाते आज भी बहुत बहुत सारे लाखों करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते हमारे देश के अंदर पर हर बच्चा खेलना चाहता है प्ले इज बेसिक एजुकेशन इज सेकेंडरी सब बच्चों को खेलने में मजा आता है तो मैं इस तरह से छोटे छोटे से खिलौने बनाता हूँ और उसके जरिए बच्चे किस तरह से विज्ञान सीख सकते हैं उसके बारे में भी क्योंकि जब बच्चों को आनंद आएगा उसको बार बार करेंगे उसके साथ में कुछ सीखेंगे अगर चीज उबाऊ होगी चाहे कितना रट लिया
100% नंबर भी मिल गए, उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं किया। हाँ यस तो ये मेरी कहानी शुरू होती है। मैं यहाँ पे 75 में पुणे में आया और टेल्को टाटा सुनील मोटर्स इसका नाम माझ्या है। केबिनमध्ये उसमें एक ट्रायपॉड graduate सुनील engineer सरांना की विचार डिग्री ट्रायपॉड द्यायला आई टी बॅग वाले माझ्या से केबिनमध्ये टेल्को जे कबड आहे ना और 75 में यहाँ पर आया। और टेल्को की ट्रेनिंग बहुत ही ग्रीन कलरची इज द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर एन इंजीनियर। 2 साल आप हरी वर्दी पहनते हैं और खराब मशीन पे काम करते हैं, शेपर पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग करते हैं। जो आपने कभी आईआईटी में नहीं करा वो आपको करने का सीखने का मौका मिला, वेरी प्रैक्टिकल। तो आई जस्ट लव दैट वे। फिर 2 साल के बाद में दे पुट मी ऑन अ मास प्रोडक्शन था जो थोड़ा सा बोरिंग था। तो उस समय मैंने 1 साल की छुट्टी ली अपने नौकरी से। और छुट्टी मुझे इसलिए मिल गई क्योंकि दैट प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय द टाटा ट्रस्ट। तो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे मलिका वाला, उन्होंने टेल्को के चेयरमैन उस समय एस दुर्गाकर हुए तो उनको लिखा इसके लिए। और ये छुट्टी थी मध्य प्रदेश में 70 के दशक के अंदर एक इंसान थे जिनका नाम था डॉक्टर अनिल सरगोपाल, पीएचडी करके आए थे कैलकट से, कैलिफोर्निया से, टेक्नोलॉजी से। और टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च अपने देश की कटिंग एज रिसर्च इंस्टीट्यूट उसमें काम करते थे। उन्होंने और आपने प्रोफेसर यशपाल का नाम सुना होगा, ही डिड अ पीएचडी फ्रॉम बीएमआईटी। इन दोनों ने मिलकर के मुंबई की जो म्युनिसिपल स्कूल थे जहाँ पर कोई साइंस की लैब नहीं होती, तो वहाँ पर कुछ एक्टिविटी बेस्ड साइंस शुरू करा और जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उन्होंने ये होशंगाबाद विज्ञान कार्यक्रम शुरू करा 72 कि गाँव के एरिया के जो बच्चे हैं जहाँ पर कोई भी प्रयोगशाला नहीं है, जहाँ पर कोई भी लैब नहीं है, वहाँ पर हमको जो कुछ भी गाँव में चीजें मिलती हैं, स्थानीय चीजें हैं, सस्ती चीजें हैं, लोगों को उपलब्ध है, उन पर आधारित हम किस तरह से इट्स नॉट लाइक ए स्टैटिक वर्क। मुझे 3000 स्कूलों में जाने का मौका मिला है और मैं कहता हूँ कि अब मुझे अपनी साइंस लैब दिखा, क्योंकि मुझे स्कूल के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है उनकी साइंस लैब में। अभी ज़्यादातर स्कूल ऐसे होंगे जो अच्छे स्कूल हैं, दर्जेदार स्कूल जिनको कहते हैं एलीट स्कूल्स, तो वहाँ पर आपको ब्यूरेट्स, पिपेट्स, फ्लास्क, फैंसी ग्लासवेयर, प्लास्टिकवेयर सब अलमारियों में सजा हुआ दिखाई देगा। और अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें एक धूल की परत चढ़ी। All this equipment is meant for the inspectors, not the children. टीचर को डर लगता है अगर कोई कांच की परत में टूट गई तो कहाँ से ला, तो अच्छा है कि उसमें ताला ही बंद है। तो मैंने बहुत देखा था, सब जगह देखा था। तो इससे हमको खिलाफत की ये गलत चीज है। हमको सीधे बच्चों के साथ तो 78 में जब छुट्टी ले लिया तो एक गाँव था बीहड़ गाँव, वहाँ पे कोई दुकानें चलती, एक साप्ताहिक हाट, साप्ताहिक बाजार, हमने एक दिन एक पेट में कहीं बाजार लगता है तो फ्राइडे मार्केट। तो मैंने कहा मैं उस फ्राइडे मार्केट में जाऊंगा और जो कुछ भी सड़क पे लोग बेचते हैं उसका एक एक स्पेसिमेन खरीदेंगे और उससे देखेंगे किस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों के लिए। इससे मजा आएगा। Is it this? ठीक है करते हो वो मेरे हाथ खा अब ये सब इसको अगर हम खींचेंगे कि रबर की जोड़ है दिस बिकम्स अ रेक्टेंगल, इसको अगर थोड़ा सा दबाएंगे दिस बिकम्स अ पैरेलल, बट दिस इज लाइक एन अमीबा व्हिच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स आउटर प्रोफाइल। ये बहुत लचीली है, ये डगमग करती है, इसकी आकृति विकृत हो जाती है। अगर पंचफुट को भी हम थोड़ा सा इंस्पेक्ट करेंगे, इसको खींचेंगे तो ये भी एक पेंडल क्या बन जाता है, एक ट्रेपीजियम कोडी जैसी बन जाती है, नाव जैसी बन जाती है, ट्रेपीजियम है। इसको करेंगे तो एक घर जैसा बन जाता है, a combination of a square with a triangle. If you push it further, this becomes an isosceles triangle. But again, this is very shaky. You inspect the square is all right angles, but if you give it a push, ये क्या बन जाता है,
चतुर्भुज बन जाता है, रॉम्बस बन जाता है, बर्फी जैसा बन जाता है, पतंग जैसा बन जाता है, ये भी बहुत अच्छी है। बट then you give a child a triangle, and no matter what she does, you can't do it. But triangle remains a triangle. Triangle की ये सबसे सबसे बड़ा गुण है, great property for triangle, and this is the bedrock of all civil and mechanical engineering. अगर आप किसी भी आकृति को मजबूत बनाना चाहते हैं, पायदार बनाना चाहते हैं, you have to divide this into triangles. और गांव के लोग जो कभी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़े, they have internalized, they've been using it for centuries. आप गांव में देखिए, कोई भी घर देखिए, तो घर की छत कैसी होती है, बेंच कैसी होती है, इस ऑलवेज ट्रायंगल, इसके ऊपर छप्पर लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, कुछ लगाते हैं. They never have the trust, which is a square, because if you put tiles on this, it just collapse. कोई भी पुल बनाती, पुराना पुल लोहे की बना होता है. All the members are divided into triangles, never into squares, because ट्रेन आएगी, कोई अगर स्क्वायर का पुल होगा तो इस तरह से डगमगाएगा. आपने बहुत सारी हाई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टावर्स देखे हो, वोल्टेज टावर. अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो ईच एंड एवरी मेंबर इन द टावर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स, एंड दैट वाज इट्स द स्ट्रेंथ. उसके बाद ये जो दो वाला जोड़ था, इसमें आप एक छेद करते हैं कांटे से, बबूल के कांटे से, या एक लंबी सुई से, and you can push a third mass into this. So you make a T-joint or a joint 3, and इसके भी तीनों कोनों में एक ही छेद करेंगे. Then we can make this tripod and insert all the 3 legs in the 3 value. And what we would get would be a very nice structure. But this is called as a tetrahedron. Chatushvarak Hindi or Chatushvarak कहते हैं. And if you just see, this is made entirely of triangles. Char. Tetra means 4 in Greek. Hedrons means triangles made of 4 triangles. And we just saw that the triangle is the most rigid polygon. And there is a 3-dimensional structure. It's just logical to assume that this was a very fundamental, but a बुनियादी ढांचा हो गए. ये दरअसल में this is nature's own trick. All bonding is essentially tetrahedral. And this is, for instance, आपने कभी CH4 मीथेन के बारे में पढ़ा. This is the molecular structure of methane. CH4 atoms with hydrogen, and 4 atoms with tetrahedron. Between there is a small bead, which is the carbon. So school-going children can make simple molecular structures. They should see just a sheet picture in a book. If they look at the structure, it gives much better insights. Then you can make if you take 2 triangles, उनमें छेद करके 3 बाय लगा के you make a prism. आपने अपनी physics lab में जरूर prism देखा for refraction plan. This is the prism. If you take 2 squares and you put 4 legs, आपको एक cube बन जाता है, घर बन जाता है. And similarly, you can take a needle and put 1 valve tube through the other, and you make a joint of 4 or a cross. And if you were to make a pyramid, this is a pyramid. The famous pyramids of Egypt. The central point is a joint of 4. Now, once you make, similarly, you can make a joint of 6 with this. Just the needle, no glue, no pellicle. Very easy to make. So this gives you a lot of flexibility because अगर हमारा ये था कि अगर माचिस ने अपने तो चूल्हा नहीं जलेगा, तो रेडिएबल और साइकिल अगर कोई उपकरण है जो हर शहर के अंदर आपको मिल जाएगी, तो साइकिल मिल जाएगी, रेडिएबल. So this I did in 78. I was very young at that time. I was 25 years old, a very young engineer. And मुझे लगता है this is much better than making facts and working in other products. This is the conclusion I came to. And this is so much more fun. And this is my first book. मेरी पहली किताब का नाम है कि 13 भाषाओं में आई. It was translated into Chinese 10 years back. So that was my first book, which was right because I've written about 24 books which can be all freely downloaded to my website. I don't believe in sharing. I've been asked to get back, so it doesn't really matter. So you can make lots of, it's like a mechanical.
आपने ये घर बनाया, इसके ऊपर आपने पिरामिड लगा, थोड़ा सा घर जैसे गांव की झोपड़ी जैसी बन गया। अगर आप एक टेट्राहेड ये देंगे, प्रिज्म देंगे, प्रिज्म के ऊपर देंगे तो ये कोई मंदिर जैसा दिखाई देता। यू कैन ऑल्सो मेक दिस ऑक्टेहेड। ये 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स होते हैं, तो वन ऑफ दिस is symmetrical, and then you can just see, you can split like a top, right? It's symmetrical. So this is an icosahedron. You take it into 6. Use only 5. At any junction, we don't use 6. We don't put planar chatai as a array. If you wanted to curve, you just use 5. The nice thing about this is that you can flex it. This becomes a geodesic dome, and this becomes a rago, and you can play around with it. It does cost much money. You don't have to, the only thing you need to buy is a cycle battery, which is very cheap. So this is it. Since then we've been making lots and lots of, I'm going to show you this. This is an ordinary straw. हम इसको थोड़ा सा दबा देते हैं और जिससे कि थोड़ी सी चपटी हो जाए। And what I'm going to do is to just cut a point over here. बिल्कुल जैसे भाले की नोक होती है, पेंसिल की नोक होती है। Now if you look from the side, it's like a baby crocodile's mouth. This becomes a reed, R-E-E-D, a reed which vibrates and makes sound. I'm going to put this in my mouth and blow my lungs out. बहुत इसमें बुलंद आवाज है। आप देख नहीं सकते आवाज कैसे पैदा हुई, क्योंकि जो रीड कंपन कर रही थी, आवाज पैदा कर रही थी, वो मेरे लिए। मैं इसको बाहर रख सकता हूँ and instead of blowing out here, I can what's happening is opening and closing it very fast. It's vibrating. कंपन कर कंपन पैदा होती है, आपको रखने की जरूरत है क्या? ज़्यादा कीमती भी नहीं है, बड़ी मजेदार है, इससे बहुत बहुत आनंद आता है। बच्चे साइंस की कक्षा छोड़ते नहीं। It's the most amazing, it's magical to be in a science class. That's the feeling we want to capture. अब इसके अंदर हमने क्या करा? इसके अंदर हमने 2 छेद बनाए, वही है, 2 छेद हैं। अब हम क्या क्या बना रहे हैं? क्या कोशिश कर रहे हैं बनाने की? बांसुरी। थोड़ी बेसुरी है पर है भाषा। एक और इसके साथ बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं कि इसमें फूकेंगे, इसमें से आवाज पैदा होती रहेगी और इसको काटते रहेंगे, इसकी लंबाई को छोटा और छोटा करते रहेंगे। तो आपने देखा कि स्थापना शुरू के दर्शन आपको एक और से हो जाए, तो बहुत अच्छी चीज है। हमने ये भी देखा कि जितनी लंबी स्ट्रॉ थी उतना स्ट्रॉ नीचे था, और जितनी स्ट्रॉ छोटी होती गई स्ट्रॉ ऊंचा ऊंचा और ऊंचा होता गया, और जो सबसे छोटी स्ट्रॉ है उसका सुख सबसे ज्यादा, आवृत्ति सबसे ज्यादा है। हमने बहुत साल बच्चों के साथ फ्री वर्कशॉप करेंगे, और हर रोज एक शिक्षक तभी जिंदा रहता है जब वो रोज बच्चों से कुछ सीखता है। ये मेरी जिंदगी की निहायत है। टीचर्स डाई वेरी अर्ली बिकॉज़ इट्स अ वेरी टफ जॉब। दफनाए मारने जाते हैं, बट दे डाई वेरी अर्ली। पर एक टीचर वही जिंदा रहता है जो रोज बच्चों से कुछ सीखता है। एंड दिस इज व्हाट द चिल्ड्रन डू दिस। सो यू कैन आल्सो डू दिस। दिस all kinds of funny noises. This is what the children practice. I'm going to show you 2-3 more voices. एक छोटी सी मोटी सी स्ट्रॉ है, तो इसके अंदर क्या करा कि सील कर दिया, बंद कर दिया, फिर कैंची से लेकर के we cut the top right and the bottom diametrically opposite, 2 छेद बना। इसके अंदर बिग चेकर का पंच होता है, सिंगल पंच, उससे एक छेद बना दिया बस। अब ये देखिए छोटी की स्ट्रॉ है पतली, इसमें छेद बनाए हम, जिससे कि अगर हम इसको बंद करें और फूकें तो इसमें से ब्राइटनिंग में हवा बाहर निकलेगी।
इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो देखिए इसकी दिशा में जाएगा. It costs very little money to make this. ये भी मूवीज को है जिसमें हमने 4 कट लगाए यहाँ पर भी वेरी डीप वी कट्स. इसके अंदर एक डोरा पेपर है, डोरी में गांठ लगा के जैसे टेप हो गया, गोल्डन टेप लगाए कि दूसरे दिखा के ट्रांसपेरेंट टेप दिखाएंगे. Now just see this. This is like a robotic finger. But put this and plastic has a tendency to go back, then it goes back. So this is what it does. But for children, it costs very little money to make. There is a very nice book on my website, The Joy of Making Indian Toys. This is by Sudarshan Khanna, who studied at the National Institute of Design, and he worked there for 40 years. उन्होंने बहुत अच्छा काम करा. जो हमारे परंपरागत खिलौने हैं, he collated and put 100 toys together in a book. ये नेशनल प्रेस में छापी है. ये हिंदी के अंदर है. हिंदी में मैंने इसका अनुवाद करा नेशनल प्रेस के. उसमें ये खिलौना है. ये झाड़ू किसी के खराटा. गरीब से गरीब घर में खराटा तो जरूर होगी. तो एक लंबी खराटा है, छोटी खराटा है, और इनको दोनों को कस के बांध देते. You can see that the short arm is slightly bent down. It's not exactly at right angles. अब इसमें ये शायद खिलौना केरल से बना है. यहाँ भी बहुत नारियल के झाड़ पाए जाते हैं. तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें जो बेबी कोकोनट जो पेड़ से गिरता है उसी को इसमें फंसाते हैं. Where I live, there are no coconut trees, so I just use an eraser. This is a piece of rubber slip up. थोड़ा वजन हो गया इसमें. अब इसको हम अपनी इंडेक्स फिंगर पे टिकाते हैं. ये लंबी साइड है, तो और लंबी साइड की ओर इसको घुमाते हैं. Now this is like the Sudarshan check. Centrifugal force, centripetal force, very big words for little children. एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से कचरा फेंकते हैं. They have no feel for it. And we are always bombarding our children with these big words. We must help them try and find the meaning of these words through experiences. अपने तजुर्बों से, अपने अनुभवों से बच्चे को कुछ मायने दे. ये बहुत जरूरी है. क्यों नहीं करना? But this is small thing. गरीब से गरीब बच्चा एक झाड़ू की सीख, एक पुरानी चप्पल का टुकड़ा is very very affordable. Now this is 100-year-old toy. This has been a darling of physicists. Any inspired physics teacher across the world would show this to students. अब क्या है? पेंसिल है जिसमें एक तरफ रबर होगी. आपने कैसी पेंसिल जरूर देखी. कभी कोई गलती करी तो आप मिटा सकते हैं. इरेजर over here. तो उसमें क्या करते हैं? एक पेन नाइफ से 5-6 खांचे बनाते हैं. V notches. They should be slightly deep. फिर एक कार्ड शीट लेते हैं. एक rectangle काटते हैं. कट्टम काट बनाते हैं. To locate the center and make hole in the center. Then put a pin. So the pin goes into the rubber. So this can rotate free. And this is slightly looped. You can see this. This is a small rubber to prevent the fan from flying. That's a toy. It's been there for 100 years. मेरे हाथ में क्या बॉल पेन की लीफ है. आप खराटा झाड़ू भी ले सकते हैं, टूथपिक भी ले सकते हैं. आप इसको अगर रख लेंगे समथिंग अमेजिंग है. Nobody really knows why this happens. It's a very very complex phenomenon. There's 6 major research papers on this toy, and you don't need the $6 million Hadron Collider for making it. Every child can make it and have fun with this. Schools are boring. You may not agree with me, but schools are boring places. Children go to school because they're pushed by their parents. Any self-respecting child would never go to school. And I can vouch for it because I've been to 3,000 schools. And I always tell children, if you want to survive school, make this toy. अगर टीचर आपको नोट्स लिखवानी हो तो आप लिखिए. जब टीचर का ईट आपकी तरफ हो तो एवरी चाइल्ड डूइंग दिस. भगवान ने उनको बच्चों को इसीलिए भेजा कि दुनिया में कुछ आनंद दे सके,
दुनिया का मजा ले सके और मजे में कुछ सीखें, इसी लिए आप इसको जरूर बनाएं। कागज से बहुत सारे चीजें हम कागज से स्क्वायर पीस पेपर एंड दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट एंड दिस इज अ स्मॉल, दिस इज लाइक द लेटर बी फॉर मैन, बी फॉर विक्ट्री, अंग्रेजी का अक्षर भी जैसा होता है। ये किसी जानवर के दो कान जैसे दिखाई देते हैं, तो हमने अगर इनको दोनों को if I take it and fold this in the front, fold this. It takes 10 seconds. सजा बन गया, this is a rat. खरगोश के दो लंबे कान है, खरगोश के पैर है, खरगोश का मुंह है, ये खरगोश की पूंछ है. I just hold the legs below the body and grab the tail and move the tail forward and backwards. When I was a child, 5 years old, 6 years old, I used to make this and ये सदा बाहर खिलौना है. अब मैं 70 साल का हो गया, अभी वो मुझे 10 seconds and you put a smile on the face of a child. Doesn't cost much. इसी तरह से अगर आप एक स्क्वायर लेते, एक स्क्वायर, उससे आप एक चिमनी बना सकते, you make a bird, जापान में 3 and this no कोई डिप नहीं, कोई कैच नहीं. In less than 30 seconds. It's been unmatched. 300 साल से जापानी बच्चे स्टूडियो को बना, unmatched. हमारे स्कूल में बच्चे 18 साल गुजारते हैं, फिर भी पूरे भारत में करते बगैर कुछ सीखे. बहुत दर्द है, मेरे दिल में बहुत दर्द है. खुशी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है. आप लोग जरूर सीखिए. आपसे उम्मीद है अपने बच्चों से बेहद कुछ करेंगे. अब हमने क्या करा, ये बहुत 30 साल पुरानी है और हम कई सारी चीजें हैं. ये कागज की पट्टी है और इसमें हमने 2 कट लगाए, एक कट ऊपर है, एक कट नीचे है. अब इन दोनों कट को हम इस तरह से एक दूसरे के अंदर फंसा. अब ये क्या दिख रही है, मछली जैसे like a fish, and a fish is supposed to swim in water. This is the flying fish. It's a very nice flying fish. तो हमने क्या करा कि वही चिमनी बनाई और इसके पूंछ में एक हेलीकॉप्टर जैसा लगा. ये क्या है, एक रीफिल का टुकड़ा है, बॉल पेन के रीफिल का टुकड़ा है और एक हेलीकॉप्टर. आपने बच्चों को हेलीकॉप्टर बनाने के लिए इस तरह के हेलीकॉप्टर, दैट्स इट. और उसमें टांचनी है तो रीफिल के अंदर. सो रीफिल इज द बुश ऑफ द बेर एंड द पिन इज द एक्स. एंड नाउ सी व्हाट इज आजू-बाजू जो समझदार बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, हमेशा हम एक ऐसे कचरा समाज में जी रहे हैं जो भयंकर कचरा. जितने इश्तार आप अखबार में देख रहे हैं, कंज्यूम एंड थ्रो, बाय मोर, कंज्यूम मोर. All the multinational corporations, they just want to deepen their market and they want to get at your brain to buy more. So we must read between the lines. We must buy less and pick up what's being thrown on the roads and try to make toys from that. That's what clever people do all their lives. So just now, when you say, where do I get old refills? Now I will tell you the secret. What I have done all my life. मुझे बहुत से 30,000 स्कूल में हर रोज किसी स्कूल में जाने का जरूरत था और मैं स्कूल में 10 मिनट पहले पढ़ता और मैं फिर स्कूल का एक चक्कर लगाता. अगर किसी की रिफिल खत्म हुई होगी तो वो क्या करेगा, उसको रिफिल को लेकर के रॉकेट जैसे ही विल लॉन्च आउट ऑफ विंडो. यस और नो? So the people should be lying outside the window. So if I take a round of the school, I collect my whole stock of refills. Right? This is what thinking people do. You don't have to buy all refills. You can collect them. Right? This is what. ये बहुत गजब की है. 1928
1928, अभी 2028 आने वाली है, 4 साल में इसको 100 साल हो जाएंगे इस बात को। This was designed by a mathematician at Harvard, Arthur Stone. अब आपकी गजब कागज का बना रहा है और आपको 4 चित्र दिखाई देंगे। क्या? तितली, बेडूक, चील, फूल पाखू, butterflies, frogs, snakes, eagles. Butterflies, frogs, snakes, eagles. 4 pictures which come in a sequence बना के लगाया। अब 4 तस्वीरें और 4। कोई बताएगा इसके अंदर कहानी क्यों हुई है? कौन सी कहानी है इसकी? कौन बताएगा? बहुत अच्छी कि भाई इतनी कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े कौन खाते हैं? बेडूक खाते हैं, मेढक खाते हैं, मेढक को कौन खाते हैं? खाते हैं, चील को कौन खाते हैं? तो इस तरह से you can make a very nice illustration. अगर आपके पास में you can make if you have A4, one A4, no glue, just one scale and a pencil. In 3 minutes you can focus. No glue to this. And then you're just limited by your imagination. Science is full of science. चक्कर ही चक्कर है. The life cycle भोजन चक्र देख लिया आपने, the seasons, अभी जाड़ा आया, जाड़े के बाद में बसंत आए, बसंत के बाद में गर्मी आएगी, गर्मी के बाद में फिर बारिश आएगी, फिर जाड़ा आएगा। There are 4 major seasons in our country and you can read this 4 months. The life cycle of a butterfly, the life cycle of a frog, all of you read this in biology, but you can make this much more fun by making this. Because nobody knows this. Just to take your fingers in an old piece of paper. That's it. इसका नाम अंग्रेजी में फ्लिक्स है। हिंदी में कोई नाम नहीं था, तो हमने इसका नाम रखा घुमक्कड़। जो घूमता है घुमक्कड़, तो घुमक्कड़। आप छोटा कागज देंगे तो छोटा बना सकती है इसको, छोटा सा घुमक्कड़। और इसके लिए अभी हमारी क्रिसमस आ रहा है, 25 दिसंबर को क्रिसमस का बड़ा दिन होता है, तो हैप्पी क्रिसमस आप अपनी दादी के लिए, नानी के लिए कुछ कार्ड बनाइए और नया साल आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर, you can make a dynamic card which moves and your grandma will be very happy receiving a card like that. This is something which you can't buy on Amazon. You may have money in your pocket, in your jeep, but you can't buy this. But if you're clever, you can make it yourself with your own hands. It's very nice. This is again in the same series. This is a 14-page book. इसमें 2 स्क्वायर है, इस साइज के 2 स्क्वायर, a little bit of glue in that. उसमें there was no 14-page unending book, कभी ना खत्म होने वाली थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. This is the last page of the book starts again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. We can just keep going on. 2 minutes to make. अब बच्चों को, हर बच्चे की एक प्रिय कहानी होती है जिसको वो 50 बार भी सुनते हैं, उसके बाद में भी बोर नहीं होते। They know the story inside out. Take a story. Every child can take a story like that. Divide this into 14 parts and make an illustrated picture of that. Every child would have a unique book, जो सबसे अलग होगी और उसकी सबसे प्रिय कहानी सही तरीके से। मैं कुछ पंप दिखा रहा हूँ, हम लोग बहुत सरल से पंप। मेरी एक वेबसाइट है अर्जुन गुप्ता वॉइस, उसको 20 साल 2004 में जो कुछ भी हम काम करते हैं उस वेबसाइट पे फ्री है। मराठी में 1100 वीडियोज है, हिंदी में 1100 और इतना भाषाओं में ये वीडियोज हैं। स्पेनिश में 350 वीडियो हमारे स्पेनिश में। दुनिया में आपको नहीं मालूम होगा 26 मुल्कों में स्पेनिश बोली जाती है। लैटिन अमेरिका की स्पेनिश फर्स्ट कॉलोनीज, जहाँ आपको राज करा अपनी भाषा दोस्तों ने हम पे राज करा, हम लोग उसको अंग्रेजी सिखाई, मतलब बात। तो मेरी वेबसाइट के ऊपर गिवन 26 पंप्स, 26 पंप बना। मैं आपको 2-3 की झलकी दिखाता हूँ। यहाँ दुनिया में कोई भी 26 पंप नहीं बना कबाड़ से जुड़ा। मेरी एक किताब का नाम है पंप्स टू द डंप, कचरे से हम पंप कैसे बना सकते। सो दिस इज एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, उसमें एक झाड़ू की सी
बीचों बीच करा, दो को छोटे हाफ कट है, हाफ कट, वेरी इजी, हाफ कट, पूरा कट नहीं तो एक हाथ अलग हो जाएगा। उसके बाद में इन दोनों में ऐसे मोड़ देते हैं, ट्रायंगल बना, and you put a tape, बेल्ट जैसे बांधे। This is exactly what I want. Very simple. Okay, I put some tape, and this is you just see. If I spin this, amazing. It's a centrifuge. If you spin something, आप जरूर घर पे जाके आज बनाइए, कम से कम पेड़ पौधों को पानी दीजिए, छिड़काव की। This is very nice. Pump. I've got a balloon. It's a balloon pump, but इसको ऊपर रखा गया, but it can blow the balloon, right? It's a real pump. हमारी वेबसाइट पे there is only one slogan. Very anarchistic slogan. It's something which provokes you. The best thing a child can do with a toy is to break it. बच्चे सबसे अच्छा काम जो बच्चे खिलौने के साथ कर सकते हैं उसको तोड़े। बच्चे वो जिज्ञासु हैं, ये तो only curious cats left, वो जानना चाहते हैं किसके पेट में क्या है। बच्चे क्यों तोड़ते हैं? आतंकी नहीं बच्चे इसलिए तोड़ते हैं जिज्ञासु हैं किसके पेट में क्या है। जब तक उसकी पुष्टि नहीं होती तब तक वो छुपते रहते हैं। And the great toys in the world are those which should be pulled apart and put it back. And now this is, you can take this apart. ये क्या साइकिल का पुराना है, ये फिल्म ग्रीन की डब्बियां हैं, तो इसको आप पूरा इसको अंदर बंदर ढीले कर सकते हैं और बाद में Now this is the lid of this. ये तो हवा निकलने के लिए मैंने लगाया। This is the lid. You can see I put a tape over here. इधर से पूरा तो हवा जाएगी। Can air come from here? This is one-way traffic. So this is my delivery valve and engine. This is on the back. Can you see this? This is go. Can I suck in here? Perfect. A valve is equivalent for in electronics you will transistor for a diode which is one way. So this is equivalent in mechanics. And so this is the intake of the air. You move it over from here, and this is my delivery. So that's it. बच्चे कभी नहीं भूलेंगे कि पंप कैसे काम करता है। अगर आप एक पंप से हवा भरेंगे, इसमें मोटी चीज, बिल्कुल ISO प्रमाणित पंप हमारी। Many toys, hundreds of toys for people because they are absolute. You could be A4 size के कागज से without wasting any paper. You can make 4 A4 size. And what is this toy do? It's a very nice color. See this is again very nice. तो मैं आपको कुछ ये बहुत चीज है। आठवीं नवी में हर बच्चे चाहे कोई सपोर्ट इन इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स दे नीड टू मेक इलेक्ट्रिक मोटर। आपको वो कितना से मोटर बनाया है एक नहीं तो ये दिखाता है कि कितनी गलत तरीके से हम सीखते हैं। इट्स अ वर्किंग मॉडल। मैं आपको से कह सकता हूँ कि हमारे सेंटर में 1 लाख बच्चे। सबसे महंगी चीज में क्या होता है? टेल मी व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग?
This is battery. Battery costs 30-40 rupees. These are two magnets. These are 1 rupee each. और क्योंकि इस पे हमारी सीट का कवर जो था वैसे ही होता है. What is this black thing? ये आपने देखी? It's the same cycle tube, old cycle tube पर रबर का छल्ला. इसको काट के. अब two safety pins ना. कितने वोल्ट की बैटरी है? कितने वोल्ट की बैटरी? 1.5 टॉप की बैटरी. तो 1.5 volts across this. रबर में कुछ उतार कर रखा है 10 माइल्स. इन दोनों के बीच में एक छोटा सा टॉर्च का बल्ब लगाएंगे तो वो डिवाइस बहुत तेज से चलेगा. अब दिस इज अ कॉपर वायर. जो मोटर बाइंड करता है 1 मीटर कॉस्ट अबाउट जब बच्चे बनाते हैं कि आंखों में चमक अगर मोटर ना हो, इलेक्ट्रिक मोटर ना हो तो पंखा ना चले, हैं? वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ना चले, चक्कर जाम हो जाए, हैं? मोटर सही. हमारे घर में 8-10 मोटर, मिक्सी में मोटर है, फ्रिज के अंदर मोटर है, वॉशिंग मशीन में मोटर है, पंखे में मोटर है. पंप मोटर ही पंप करता है पानी को ऊपर की टंकी के अंदर. एक 10 लीटर के अपने घर में इस्तेमाल. कोई अच्छा ध्यान से ये रईसों के लिए नहीं. Even very ordinary children can most expensive things कि वो बैटरी cost 5 rupees. 5 rupees if you have the batteries. 1 rupee for this, 1 rupee for this, 2 rupees for this. Cycle 1 rupee per week. Every child must. हमारी शिक्षा में सब रट्टू होता है. रखिए परिभाषा, रखिए सूत्र, रखिए परीक्षा आए और उनको धूप दिया. आपको बहुत बहुत अच्छे नंबर मिले, आपने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं, कोरे के कोरे रहे. उसको बदलना चाहिए. अपने बच्चों के लिए सीखना बहुत आनंददायी बना सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं. उसकी कोई बहुत महंगी कोई जरूरत नहीं. बहुत ही अच्छी चीज है. ये आपने लिया कि टेट्रोपैक्स. टेट्रोपैक ये कितने कितने मिलीलीटर आते हैं लिखा हुआ. अगर आप इसकी लंबाई को, चौड़ाई को, इसकी ऊंचाई को गुणा करेंगे you will get roughly 200. This is how you measure the volume of a panel. Multiply the length, width and the height. 200. हमने इसको आधे में काट दिया तो क्या हो गया हमारा? कितने का बन गया ये? 100. And similarly, we can make 50 mm. So we can make different kinds of measuring cylinders. Right? This is it. Now, if I take this 50 mm, this 100 mm, I put this. How much water inside this? पूरा भर जाएगा. कितना पानी आया इसमें? 200 ml पानी आया. How much water by drunk? How much water by drunk? 100 ml, right? And then I can put my pocket. Very nice. All of you must carry a cup like this in your pocket every day, right? This will give you a good feel what volume is, what a liter is, what half a liter is, right? Very nice. It's hygienic. It's dignified. Doesn't occupy much space. This is a 1 liter. You can see this is a 1 liter fruit juice box, and you can make a very nice plus. My friend was Vidula was invited to Italy to give a lecture, and in a village she saw that many women were actually making this and selling it. विदेश में कुछ चीज अपने हाथ से बनाते हैं, उसकी ज्यादा कीमत होती है. उसमें बहुत हाथ की मेहनत नहीं होती, मशीन से नहीं बनी. कुछ चीज आप बहुत तेजी से सस्ते में बना सकते हैं, but each one is individually crafted by hand. So this is the purse, waterproof purse. इसके अंदर एक में आप पैसे ₹10 रख सकते, ₹10 का नोट है, इसके अंदर रुपए रख सकते हैं, सिक्के रख सकते हैं. इसको बंद वेलक्रो लगा पर्स बन गया और जेब में.
बारिश हो इतना सुंदर देखिए tetrapack is a terrible material from the point of view of the environment. Kabhi if you see the inside of a tetrapack, now this is tetrapack अंदर से इस तरह से the silver part is actually aluminum foil. There is aluminum foil, there is card sheet, there are 2 layers of plastic. Now it's a multi-layer laminate. और आप एक tetrapack लस्सी पी करके इसको फेंक दीजिए, डंप यार्ड में 500 साल सड़ेगा. Aluminum does not even rust. Plastic सैकड़ों साल लगते हैं उसको. You can't recycle it because there are so many layers. Want to recycle, you have to separate the plastic and the aluminum and the card sheet. You can't separate it, it's very energy intensive. So people rely on it. So don't drink from Tetrapack, pick up the Tetrapack. One of my books, Little Toys, you can see on my website and download it. It's published by the National Book Trust 30 years back. It's about pick up a Tetrapack and I'll show you how to make 30 toys. Little toys today. To make now, this is another possibility. This is something called in mathematics inside outside cube. ये क्यों बनते हैं? जैसे पासा होता है, डाइस होती है, silver all over. But I'm going to press this and 2-3 बार spin down. The silver part is gone inside and the colored part is called as the inside out. Very nice topological puzzle. And क्योंकि इसमें 2 लेयर प्लास्टिक की है, एल्यूमिनियम है, तो ये आप सैकड़ों बार इसको आप कुछ होता नहीं. Just the ideal material. So you 30 toys just using the Tetrapack. Hello, very nice. You can see this. This is just a piece of कोई भी टूथपेस्ट का डब्बा, कार्डबोर्ड का कॉन्क्रीट का होता है. It's a drama. It's something very amazing. I want to just see this. आप गौर से देखिए, हर एक जोड़ में एक स्टेपल लगा है. स्टेपल मार एक टोक इधर, एक टोक इधर. उसकी वजह से it can do many things. Staple is universally ऐसे लोग आसन करता है कि बाबा रामदेव जी ना कर पाए. आप देख सकते हैं बिल्कुल ये वेटुक आसन है. कुछ आसन करता है. What degrees of freedom you have just using this staple. Amazing things, right? They say that any fool can make a complicated thing. The fools always make complicated things. It requires genius to simplify things. To make them interesting and simplify them to the poor. That's what it is. आपने मोटर देखा? बड़ी बहुत This is a पुरानी सब्जी 1070 से एक बार इंजेक्शन देते हैं, medical technology throws so much of stuff. It's a shame. All these companies should be hauled up. They must recycle it someplace, right? Now this is the अब हमें needle से बोलना है, needle निकालिए. This called as a syringe generator. Generator means electric generator. And आपने देखा वो तो काले मैग्नेट देखे आपने मोटर में लगाए थे, वो फेराइट मैग्नेट्स बहुत सस्ते. These are very strong magnets. इनको कहते हैं नियोडाइनियम मैग्नेट्स. रेयर अर्थ के नियोडाइनियम. इनको अलग करना दो है, इनको अलग करना बड़ा मुश्किल है. इतने कस के छुपे. उसकी वजह से ही ये मॉडल काम करता है. Because it's so powerful. Now I put them inside the barrel. आप देख सकते हैं बैरल में आगे पीछे हो रहा है चुम्बक. और फिर मैं यहाँ पर एक रबर रखता हूँ. This is my magnetic strip. फिर क्या करते हैं, पतला तांबे का तार रिबाइंडिंग वाला. हमने मोटर के लिए तो मोटा किया है, इसके लिए बहुत बड़ा 36 गेज का. How many turns are there? 1000 turns. Start to end. दो से होंगे, उनको आप स्क्रैप करें, इंसुलेशन निकल जाए.
and you just put LED. That's it. Now, this is my electrical circuit and this is my magnetic circuit. Now, when I move the magnet back and forth, what will happen? It's like a moving magnetic field. Because every magnet would have a strong magnetic field all around it. So it's like a moving magnetic field. These lines of forces are cut by this coil, and there is a EMF, electricity generated. See this. It's actually generating electricity. Even with a 220 megawatt plant, the principle remains the same. The principle doesn't change. School going kids, it is totally empowering. You can generate electricity. Right? Amazing stuff. This is something which we did 20 years back. It's called as a levitating pencil. पहले तो देखते हैं आप ये रबर का ये टुकड़ा है इसमें 4 चुंबक लगे हैं और ये पेन है जिसमें 2 चुंबक हैं उनकी वजह से चुंबक की वजह से ये पेंसिल हवा में झूलेगी इट विल लेविटेट इन दिस सेंस कोई किसी मस्त का जाप कर रहा है कोई दैवीय शक्ति है इसके पीछे दैवीय शक्ति को छूटती है क्या ये भी पूछना चाहिए विज्ञान को एविडेंस चाहिए चाहे आप कितने बड़े कुर्सी पे बैठे हो कितने बड़े महात्मा विज्ञान हर एक से पूछता है आप किसका गिव मी द प्रूफ गिव मी एविडेंस हम नहीं मानेंगे ये झूठ भरे this is because of magnetism right if I spin this pencil very amazing how much does it cost less than 15 rupees 1 rupee each for the magnet 6 rupees this is the kind of Chinese pen which are very cheap this is the वाले पेन है क्योंकि इसमें चुंबक चल जाता है वो आसानी से just केयरलेस ये कोई आप हवाई पड़ता है 10-15 रुपए you can Google a name Hamsa Padmanabhan Hamsa Padmanabhan her father was in America one of India's greatest physicists P. Padmanabhan he died of a heart attack in 2004-05 Hamsa was in the high school and she didn't go to any fancy school she went to the Kendriya Vidyalaya in Malaysia opposite the university. And Hamsa was fascinated by how this works. Like every child would. And she put a paper on this. Today, a minor planet is named after Hamsa. You can Google it because she explained how this works. Now, this is the potential of every girl in this country. Not through fraudulent means, because our children are clever. And we must give them their due and not propagate fraud. Professor Padmanabhan, when he died, the most cited Indian physical scientist in the world. Amazing man. After Professor Narvikar, he was the gem which I had. He just died. It's amazing man. Look at this. If you there are in the world, China has magnetic planes. Magnetically levitating planes. अगर आप दिल्ली के एयरपोर्ट से आए बड़े-बड़े जो एयरपोर्ट होते हैं शहर में जगह नहीं इस सिक्योरिटी खराब है if you land at the Beijing airport you take a magnet plane in 10 minutes you are inside the city it's a simple 5 kilometers this will be Oh, this is something very nice. This is a very nice experiment. I would have forgotten about it. Can you recognize what this is? Can you recognize what this is? Thread. Where would you get this thread? बताइए मराठी मध्ये सांगा मला काही एवढा प्रश्न प्रश्न सांगा ते पोता आहे प्लास्टिक पोता कळतो मला गहू धान होता है
अभी जूना पोता है, इसके स्ट्रैंड्स सब निकल गए हैं. We've just taken about a dozen strands and tied up. They can't. Today's a kind of very. It's on a dry day. You could one day. It's one of the most fantastic experiments. Today is a very moist day. So we charge these. It's the greatest experiment on static electricity, right? All these. Also I tried it, but today you can see it's very overcast. But you all go out. आपका हाथ पास आएंगे, आपके हाथ की खबर ट्राई. Please try. The fascinating है. कोई अगर स्कूल में एक पुराना पोता ले आए, तो whole school can take the experiment back home. No, that's the beauty of this experiment. But this is very, very nice. Just like this is invited to China in Hong Kong. She said, so you've taught us so many things, and she gave me a couple. She taught me a couple of things. Without many things. A 2-minute toy. It's like a flattened butterfly. What else? We'll make lots of toys with matchboxes. See this? Very nice toy. Matchbox. Another one, matchbox. इसमें क्या करें? एक माचिस की, एक खाली माचिस है, और ये दराज है. ये दराज है. इसका जो खोखा है, I put 2 paper clips. टेप करके पेपर के थोड़ा सा बाहर निकाला, और दोनों पेपर क्लिप में डोरा डाला. Now we can just put the drawer. This is being heavy. So it's hinged on one side, and all the weight is on the other side. Now, if I just keep the thread tight, it's gravity and friction at work. But it's something. This I must tell you, this is Pune University where I worked for 11 years. You guys located in Pune. There is only one school. Its name was Vidyapeeth Shah. It's run by the Karmi Shikshan Sanstha. It's like a municipal school, the poorest school. No faculty, no professor in the university or anything ever send their child to Vidyapeeth Shah. They all send them to fancy schools like Delhi Public School, etc. 20 kilometers away, but not a neighborhood school. When we went there, we said, look, this is the only neighborhood school, and we must work with them. It's a challenge. We work with them. Bright children. Getting to municipal school children, I found to be much brighter than the elite school kids. Right? They're much freer. These elite children have too many hassles. ये मत करो, वो मत करो, ये हाथ कट जाएगा, वो हाथ कट जाएगा. They're freer, free words. The children came to a center, and they made the living. Each one made the living. Next day they came and showed us this toy, and this is the toy I am showing you. पुराना था. इसमें बीच में एक hook कर दिया, and you take 2 magnets and you stick them. No glue. North will be attracted to the sun. And this is a bicycle spoke. You just keep it like this. And these are 7th grade children of this school, original work. There is no reference in literature. Many of our videos have been done in Chinese. Why? Because I think someday the Chinese are going to make our toys and sell it to us. Right? This is not going to happen. The Chinese are smart people. The world is just realizing how clever they are. They are the people who invented paper. They are the people who invented gunpowder. Some of the greatest experiments in magnetism comes from China, and light. They can master that. Inspired by this, we made another one, which I am going to show you. And this is, ये कहाँ से आया बताइए? किसी बॉटल का, पुरानी बॉटल का छेदा है.
अब हमने क्या करा कि ये take this and this is cycle spoke, इसमें दो छेद करे, एक छेद में इसको डाल दिया, फिर दो चुंबक डाल दिए और फिर स्पोक को दूसरे छेद से बाहर। Now this is the token. That's it. And if you just leave it like this, children who sit with us. We are afraid to ask our children genuine questions because we don't know the answers. Right? Children are personal things. Right? Take them on board. A good teacher, I've been in thousands of schools, worked in 25 countries. A good teacher takes children on board. Children are her friends. Right? Huh? The best teacher on earth says, I don't know the answer. I don't know the answer. Let's discover it together. So teacher becomes a party to discovery around this school. That's what a great teacher is. Right? Great teachers are not a PhD. They never drawn the degrees. It's fine. It's fine. That's what makes a great teacher. I need a volunteer. Who will volunteer? One of you will volunteer. ये थोड़े बड़े चीज इसको आप पकड़ के ऊपर आए कस के पकड़िए। Just इसकी प्लास्टिक जो है सारी प्लास्टिक इसको आप कस के पकड़िए। Now you can see how we make this. It's a wave model. ये इंसुलेशन टेप है इसको 2-3 मीटर दूर जमीन पर रखा, sticky side up और फिर उसमें स्ट्रॉ चुका, another layer of tape on it. That's it. Now we just keep practicing. Can you ever see a reflected wave? Incident wave and reflected wave. Now I'm going to make crystals. This is the crest. This is a wavelength from one crest, from one truck to the other truck. Right? The more waves is, this is the shorter the wavelength. Right? The larger the wavelength, fewer the number of waves. And you can just simplify. Just give it a twist. This is how all information is transmitted. It's very nice model. It costs 20 rupees to make, but no school ever makes it. They buy all these fancy models which never work. Unless you can make it and make it work yourself, you're never going to be very friendly. Take one. It's another very, very nice experiment. Yeah, first. अभी लंबी थैली, इससे पहले की छोटी थैली बनती है, एक्सट्रूडेड एज अ ट्यूब, एक ट्यूब होता है इसका, ट्यूब को काट दिया, फिर एक साइड को सील कर देते, थैली बन जाती है, उसमें आपको डाल डाल के उस साइड को सील कर देते, so you can find the tube itself. Now we put a knot over it on one side, and now I'm going to blow my lungs and fill this tube with air. You just see this, right? मुझे 4-5 बार फूटता, right? और मैं नहीं चाहता था कि बाहर की कोई हवा अंदर जाए. So I kept my mouth next to the mouth. Now I'm going to remove this. Now you see, this time I'm not going to put my mouth next to the tube. I'm going to put my mouth away and blow only once. Why is that? Because your air gives velocity to the outside air, Why? and it takes with it. Wonderful. How nice. This was discovered by a Swiss
फाइनेंस के इंजीनियर पढ़े बनवाली, आपने बनवाली की तरफ पढ़ी होगी पर कुछ समझ में नहीं आया, बनवाली नाम रहा। This is what he discovered, that high velocity you doing, it creates a low pressure zone, and then all the air from the outside gets in. It costs very little money, but children would actually understand what all this is. Now, this is, you see this Xerox tape, this is a Xerox tape, half a Xerox tape, and one of the big certificates, or largely all the physics-based models, the very few in chemistry. We have a few in chemistry. I'm not into chemistry, they are on our website. But very few models in biology. Now this comes from a book called the VSO, Voluntary Civic Charity, जिसका नाम है VSO. उन्होंने 40,000 volunteers गरीब मुल्कों में भेजे. 3 of them got together and did a book, VSO Science Teachers. We've done this into Marathi, into Hindi, and it's in English, so my website. Now it comes from there, half a tape, A4 size paper. सिर्फ आधा, एक कैंची और थोड़ा सा डिंक, and you make a scale model of the human skeleton. This is the skull, this is the ribcage, this is the pelvis, tibia, fibia. There are 200 odd bones in the human body, and you make a very nice model. Don't just stop there. There is so much poison which has been built into our heads. Ask the children. Is it a skeleton of a man or a woman? Is it Mr. Jain? Is this Mr. Yunus? Is this Mr. Smith? We all are the same. But सबके खून का रंग वही है. क्यों मार के डालते हैं? This is the scientific model, but it is there to probe much deeper biases. But it's amazing. Well, I'm going to tell you one story, and I'm going to end with this. इस कहानी का नाम है टोपी शंकर की कहानी, और ये अखबार से कहानी सुनाई जाती है अखबार में। ये टोपी शंकर एक पानी के जहाज के कप्तान थे। तो मालूम है पानी का जहाज बहुत धीमे सेल करता है, हवाई जहाज बहुत जल्दी चले जाते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं, पर पानी के जहाज को महीनों लगते हैं, हफ्तों लगते हैं एक देश से दूसरे मुल्क को पहुंचने। इसमें बहुत सारे मुसाफिर देश जा सकते हैं। पहले 2-4 दिन तो मुसाफिर को बड़ा मजा आता है, पहली बार समुद्र की यात्रा कर रहे होते हैं, पर 2-4 के बाद में चारों तरफ नीला आधा समंदर, ना कोई दरख्त, ना कोई जमीन का कतरा, कुछ नहीं दिखाई, सब दूर जाते हैं, सी सिक, दैट्स द नेम। इस कप्तान थे टोपी शंकर, जो बहुत होशियार थे। तो उनका सारे मुसाफिर बोर हो रहे हैं, सबसे कहा चारों डेक पे आइए, दिन भर नाचिएगा, आपको दिल मिलेगा, एंड आई प्रोवाइड यू विद गुड फूड एंड ड्रिंक्स। टोपी शंकर के पास में एक संदूक था जिसमें टोपियां थी। हर रोज टोपी शंकर उस पार्टी में शरीक होते थे, एक नई टोपी का। दिस इज लाइक ए ह्यूज अम्ब्रेला कैप, छतरी जैसी टोपी है। If the captain is standing on the deck, it protects him from the scorching sun, it protects him from the rain. अब जब शाम को सारे मुसाफिर सो जाते थे, टोपी शंकर उसको एक और मोड़ देते थे, and next day he would be wearing a new cap. Have you seen this cap? This is Agija Bump, the fire brigade people wear a designer cap like this क्योंकि उनका जीवन बहुत खतरों से भरा होता है. They are going to go into a burning house. ऊपर से कोई मलबा गिरे, it must protect their spinal cord. So they wear cap like that. It's a fire protector. Second night, he would give it another 4, and third day he'd be wearing a new cap. It's like a shikari cap, explorer's cap. राजा की टोपी कह सकते हैं, तो किसी टोपी। First is a huge umbrella cap, second is a violin's cap, third is a shikari cap. And this is the third night. He would give it one more fold, and the fourth day. Now this is the very, very famous cap of Maharashtra. आपने जितनी भी बॉलीवुड फिल्म देखी होंगी,
बॉलीवुड इज नॉट फार 3 hours away from पुणे. उसमें जो पुलिस है वो हमेशा ये टोपी पहनता है. इसको क्या कहते हैं? इसका एक नाम है, खास नाम, गांधी टोपी. पुलिस में जो टोपी है. So these are 4 caps. One is a huge umbrella cap, one is a violinist cap, one is a shikari cap. इसका नाम है पांडु कैप. Maharashtra police में cap is called as a Pandu cap. Very famous. And we must not forget that Gopi Shankar, he was a captain of a ship. He was in a ship. Now everyone was enjoying the journey. सबको बड़ा मजा आ रहा था. दिन भर नाच गा रहे थे, अच्छा खाने पीने को मिल रहा था. All good things must end one day. अचानक बिजली छट, काली बत्ती छाती, चकाचौंध बिजली कड़कती और धुआंधार बारिश. And there is a समुद्र में एक तूफान आया. There is a storm, terrible storm, huge waves. What can a ship do? It's rocking and pitching with the waves. एक पीछे से लहर आती है, वो चीज़ पीछे से ऐसा थपेड़ा मारती है कि सारे के सारे मुसाफिर घबरा जाते हैं. तो पीछे पाना नहीं आती और हमारा जहाज जो भी तो टूट गया है. एक और लहर आती है आगे से और आगे वाले हिस्से को ऐसा तमाशा मारती है, अब जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए, जहाज समुद्र में डूबता है. अब उर्दू में कहावत है कि बलाई गिरे नहीं आती, मुसीबत गिरे नहीं आती, छप्पर फाड़ गया. And a third huge wave comes and knocks down the central part. This triangular part is called as a bridge. Knocks down the bridge. अब जहाज के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं और जहाज डूब जाता है. कप्तान के शंकर डूब जाता है, कुछ नहीं बचता उसके पास में बस एक लाइफ जैकेट. ओके गुड. 5-10 मिनट है कि आपके पास कोई सवाल हो तो सवाल जरूर पूछें. By the time I pack up my things, any questions you have? Yes, please ask. Sir, please told us the website name. Huh? You please told us the website itself. Yes. My website? I think my website is arvindgupta.toys.com. If you just say Arvind Gupta, you will reach us. Say toys from trash. We have so much on the web, you can't miss us. So, sir, my name is Shranshi and I'm from MIT WPS. Hi. I have a question. Good. So, we know that water has both reflective and refractive property. Yeah, I would ask you to don't ask me anything to do with the toys which I have. Yes. So, what toys can we make to teach children about spectrum light? What's like you see, I'll give you one example. One is key. You make a very nice spectrum. Do you see this? Yes. Old CD. It's like a grating. It's like a diffraction grating. You can make a very simple spectrometer and light में बना करके you can see that light is being divided into many colors. It's very simple. You make that discovery. So, using water, can we make something like that? Huh? Using water. Using water, then you can make a rainbow out of water, which maybe you could make if you take a small bowl of water and fill it half with water and put a mirror at an angle. It will act like a prism and you can see a rainbow in the water. It's a very simple, a very well-known experiment. Okay, thank you. Anyone else, please ask. There's one, because there's light student over here, I'm very, very happy to see there's one thing which I forgot, but it's something we need to know that. Now, this is a slate, this one is a touching slate. This is Velcro. Velcro, you know, there are 2 strips. One with hooks and they stick together. Now this is only the hook part of it. So this is my drawing slate and this is my drawing pen. And this is more like a fishing line. You can just see it. It's a bicycle spoke made into a Z shape like a grind. A bit of rubber in it. And so this makes a
If I crack the handle, you can see the wool is getting wrapped up. But it's very simple to make. And wool has a lot of fibers in it. And to a blind child, you just grow. Wool sticks from where they can feel. But I think every blind school uses this thing now. It's something which has brought a ray of hope in the lives of those who live in darkness. A very, very interesting. और पूछे थी किसी को और सवाल पूछे others yes anyone else please fast please no. Must ask questions. Hard, tough questions. That's our one. इसको आप रैप करो. इसको रैप. उसको. एक तरफ से हाथ पर जोड़ कर. बुलाओगे इसे? मैं उसे बुला दो. Let's invite O, a second year student, to the stage who will enlighten us with his inspiring words on joy of learning together. I'm Om and I'm a part of Jagriti team. We have been working with Jagriti school from past few months. Sir, I would like to tell you that हम काफी महीनों से जागृति स्कूल को विजिट कर रहे हैं और वहाँ पे वर्कशॉप्स प्लान कर रहे हैं. हम लोग उनके साथ मिलके नई नई चीजें सीख रहे हैं और सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, सिंपल वे जैसे एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इस तरह से हम उनको उनके साथ मिलकर डिफरेंट चीजें सीख रहे हैं. और ये करते हुए हमें इतना अच्छा लगता है कि लाइक हम चाहते हैं कि हम हर वीक, हर हफ्ते उन्हें जाके विजिट करें और हमारे बीच एक बॉन्ड काइंड ऑफ फॉर्म हो रहा है. लाइक द एंथुसियाज्म दे शो एंड कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो सवाल, जो पर्सपेक्टिव हम नहीं दे पाते वो जागृति स्कूल के बच्चे हमें देते हैं और हम इनसे भी काफी सारी चीजें सीखते हैं. लाइक समटाइम्स द क्वेश्चंस आर सो आउट ऑफ द बॉक्स दैट not even we are not able to answer these questions. So it's a good time we spend with them, and we believe in collaborative learning, like give and take. It's a symbiotic bond that we share, and it's unforgettable. Like we get sukoon there, sir, what we say in learning with them. So I'd like to show you some glimpse of our work, please.
Thank you, everyone. Thanks, so. Now I'd like to call Aditya to the stage to wrap things up and share his thoughts. Good afternoon to all. On behalf of MIT Academy of Engineering, I, Aditya Ubade, I am here to thank everyone who contributed to the success of today's event. But before this, there is a special announcement to make. हमें हमारे दोस्तों से पता चला है कि कल यानी 4 दिसंबर को श्री अरविंद गुप्ता सर जी का बर्थडे है. So I would like to call my friends to present him a token of love made by Jagriti School and us collaboratively. I request sir to please come up on the stage. जो आर्टिस्ट जिसने वो किया है It's a small string instrument that we and Jagriti School girls have made. There's something more. It is made by one of our students for you. It's a sketch of it. I would request everybody to see. Starting with, I thank our chief guest, Padma Shri Arvind Gupta sir, जो आज आप यहाँ आए and अपना knowledge हमारे साथ share किया. Your words were truly inspiring for all of us. Once again, thank you for your valuable time for us. I would like to thank Dean of School of Humanities and Computer Engineering, Dr. Vaishali Wangikarman, for being present for today's event. I would also like to thank Arika Kothaman for being there for this event. I thank our team of students